हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समस्त को स्वागत है ईस्ट कोस्ट एजुकेशन को। समस्त को अनुरोध कि प्लीज टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट की क्लास आगो बढ़ाइबा। ओके, आज इंडियन इकोनॉमी एंड किसी गवर्नमेंट स्कीम विषय आज डिस्कस करबा एज रिक्वेस्टेड बाय सम पीपल, है ना। तो समस्त टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जॉइन करो and please do like share subscribe as well as and our application to download करंतु समस्ते, है ना। फ्री मॉक टेस्ट दबो। ओके, फ्री मॉक टेस्ट दबो। एप्लीकेशन जे हमर होची VIT IQ ना हमर प्ले स्टोर रे अवस्थित, ना। डाउनलोड इट राइट नाउ एंड डाउनलोड करो समस्ते, है ना। और केमित लागु समस्ते सब कमेंट बॉक्स रे लिखो सर क्लास भल लागुची, क्लास भल लागुनी। ओके, समस्त अनुरोध आप टिके मते 2 मिनिट समय मोटे शेयर कर दे। राइट, आई विल शेयर इट मते 2 मिनिट समय मु खाली शेयर कर दूची। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति। और तमर सेपटे वर्षा होउची ना नाही, केमिति वर्षा बन्या बात्या होउची, के को जगह रे केमिति तो सब कहबो, है ना। केमिति वर्षार प्रभाव रहउची। जस्ट गिव मी ओके। यार आंसर टा दो तो होला, यार आंसर टा दो तो प्रीति। चल आरंभ करे क्लास टी, है ना। क्लास टी बहुत बड़ क्लास टी अछि, समस्त टिके जॉइन करो, है ना। मंजरी एंड प्रीति, ओके, प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया। चल आरंभ करे क्लास टू। ओके, कौन रही प्लान राइट आंसर देखो लेना। व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट शेयर इन इंडियास जीडीपी। ओके, भारत रो जीडीपी, ओके, जीडीपी रे हाईएस्ट कोडा कंट्रीब्यूट करे दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अथवा सर्विस एंड माइनिंग। देखो दिस इज राइट आंसर है कौन, सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा। पूरा वर्षा होजी तुम एरिया रे वर्षा होजी। ओके, द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडियन जीडीपी इज कोडा को हम बेस ईयर धरि चलते। ओके, कोडा को हम बेस ईयर धरि चलन पिला माने कमेंट बॉक्स रे लिखो समस्त बेस ईयर धरि कोडा चलन। ओके, बेस ईयर पे कोन আছে 4 5 11 11 12 15 16 20 21 कोन हो। सॉरी देह भल नहीं पिला तो सेटा पे टिके लेट हला क्लास टा माने आई इंटरप्ट हला। ओके, बेस ईयर हमें 11 12 कहबा बहुत बड़ा, है ना। ओके, प्रणाम। Which of the following is not a component of a human development index? Okay, code or component human development index रा component code आना है। Okay, like expectancy, education, per capita income, unemployment rate कौन रहेगा प्रीति एंड मंजरी एंड ऑल ऑफ यू समस्त जो ऑनलाइन हो प्लीज समस्त ऑन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। केमिति जाउ क्लास टा कमेंट रे लिखो। ओके, नो राइट आंसर जो देखिबा इट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, कौन रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज राइट आंसर। कौन रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट इट रहेगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो प्रीति। देखो द टर्म फिजिकल डेफिसिट। ओके, फिजिकल डेफिसिट माने हम कोन बुझिबा। देखो फिजिकल डेफिसिट माने कोन, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, difference between total receipt and total expenditure including borrowings, difference between revenue receipt and revenue expenditure, difference between capital receipt and capital expenditure। देखा तो
এই जो आजिर क्लासटा जे कोनसी गवर्नमेंट जॉब पई तमे प्रिपेयर होता ना कहीं कौन ग्रुप ए बी सी जो कौन सी एग्जाम पे भी प्रिपेयर होना कहीं एटा सेटा पे इंपोर्टेंट रहबो ना तो समस्त कौन राइट आंसर देखो आर राइट आंसर कौन रहबो ए क्वेश्चन और समस्त स्टार मार्क कर रखि दे दोगे फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीव्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बोरोइंग्स ओके कौन रहला टोटल रिसीव्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग घोषित दियो पिला हला आ देखिबार ने घोषित दियोटा हला आरबीआई वाज एस्टैब्लिश केबे आरबीआई रो गठन होइतला आरबीआई रो गठन केबे होइतला पिला माने आरबीआई रो गठन केबे होइतला कमेंट बॉक्स रे लिखो जल्दी जल्दी लिखो समस्त आरबीआई रो गठन कोइ होइतला हमरो मंजूरी कोन गले अन्य जमान सब कोन होउची तो मानो सब हैं आंसर दो ना मु रागी जाई छी कोन सब आंसर दो न केले अरे आंसर दो ना हैं आंसर दो ना नहीं या कौन हो सो 1935 इज राइट आंसर है 1935 राइट आंसर ओके मन लगी दो नहीं देखो मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना कौन रहबो हला प्रधानमंत्री जन धन योजना मेन ऑब्जेक्टिव कौन फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉवर्टी एलिवेशन ओके जदि हम देखिबा राइट आंसर रहबो फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन रहबो फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है बुझी देता बिदे the scheme launched in 2014 aims to ensure access to a range of financial services for the citizen okay and this is special those for underprivileged जो मानको सेतर privilege मिली सुविधा सुयोग मिलुनी सेमान पे लो इनकम बैकग्राउंड से मानो थाए सेमान पे कोन देउची बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर एवरी बैंकिंग adults access to need based credit remittance facility access to insurance pension services okay ए सब आपण जदी तुम माने सब जदी ग्रुप ए सिविल सर्विस पे प्रिपेयर हो ना तो भी एटा इंपोर्टेंट रहउची ओके समस्त एटा को माइंड कर रखो हला मन नेक्स्ट जीवा which of the following not a direct tax अभी तो डायरेक्ट टैक्स कोडा नहीं कमेंट बॉक्स में लिखो समझते अभी तो कोडा डायरेक्ट टैक्स नहीं जीएसटी ओके देखो राइट आंसर देखो अभी तो राइट आंसर कौन है राइट आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी राइट आंसर है ना जीएसटी यार राइट आंसर है ओके समस्त मन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो समस्त है ना द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस बाय है ना प्लानिंग कमीशन को बॉडीटा रोजी रिप्लेस कला नीति आयोग फाइनेंस कमीशन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ओके कौन रहबो पिला माने मंजरी एंड प्रीति कौन रहबो समस्त को अनुरोध प्लीज समस्त के आंसर दो चेष्टा करो अंतत एतिके तो आंसर दियो है ना नहीं देखी तो आंसर दियो आंसर कहला पर भी हेती कार साहस नहीं ना कौन तो राइट आंसर कौन रहबो नीति आयोग ओके नीति आयोग इज राइट आंसर कौन रहबो नीति आयोग ओके मन रखो ले जीवा द टर्म इन्फ्लेशन माने कौन बुझो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कौन रहबो पिला माने ऑप्शन बी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके देखिबा हमर ऑप्शन टा ठीक अछि ना भूल अछि ना नहीं हमर ऑप्शन ठीक अछि ना भूल अछि ये ठीक अछि increase in price in goods or services so increase in price of goods and services okay कौन रहेगा increase in price and goods and services तो बहुत बढ़िया हला मन रखो the main objective of goods and service GST okay GST का main objective कौन होती simplify tax structure increase tax rate reduce government expenditure promote foreign investment कौन रहेगा पिला माने देखो तो गोटे पिलाटे कहते कौन कि ना सर स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आनंद है मुझे जानली से पिला देखा नहीं है देखो आंभे जब तुम किसी काम कर तुम किसी काम कर कौन पार्टिसिपेट कर आंसर दियो ना है ना देखो राइट आंसर है कौन टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर कौन है टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर इज इट ऑप्शन ए है ऑप्शन ए हम है प्रीति है ना टू सिंप्लीफाई जी तो कास्केडिंग टैक्स स्ट्रक्चर रही सेटा को सिंप्लीफाई करबा जेमति कि रहला सपोज तुम गोटे जिनिस किणुछ छाड़ तुम गोटे कंपनी करछ हला तुम जदि कंपनी करछ तुमको व्हाइट रहिगला ता सहित तापर स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स रहिगला है ना
तापर डिफरेंट डिफरेंट बहुत गुडे टैक्स होते तो से गुडा को माने मर्ज करके गोटे सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर आना गला दैट इज जीएसटी बोली कहला जाला तापर देखो largest contributor to India's exports is agriculture, textiles, petroleum products and gems and jewelries. Okay, कौन रहिबो देखो the question of the largest contributor to Indian exports. Okay, कोडा है ना कोडा इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत कंट्रीब्यूट करे इंडिया रे एग्रीकल्चर टेक्सटाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जेम्स एंड ज्वेलरीज कौन रहिबो ओके देखो ऑप्शन सी रहिबो हला राइट आंसर है ऑप्शन सी आर रहिबो कारण पेट्रोलियम रो कौन कौन सब प्रोडक्ट बाहर चिना हमर से सब गुडा को रोजिल ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बहुत बुढ़ा ऑप्शन सी हो राइट आंसर है मन लई दो नै जीवा the term balance of payments refers to the term balance of payments माने कौन difference between exports and imports difference between government receipt and expenditure difference between total inflow and outflow of foreign exchange difference between savings and investment okay कौन रहेगा समझते कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी अच्छा एबे जो बर्ता मंथा चलची बात्यार ना जो मंथा आको किए ना देची बात्या मंथा तार नाटा किए देची कहले देखिबा अच्छा टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स माने कौन होची देखिबा देखो डिफरेंस बिटवीन टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट रो होची डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ओके हेलन ओके ऑप्शन सी रहिबो राइट आंसर है ना मन दो अच्छा प्रीति तुम टिके इकोनॉमिक्स टा को टिके भलो से देखो जदी ग्रुप ए सर्विस पे प्रिपेयर हो चला इकोनॉमिक्स टा बहुत पॉलिटी टा टिके बहुत पड़ता है ज्योग्राफी टा को भी छाड़ीबनी हला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एनआरजीए ओके कौन रहबो पिला माने है ना जो एनआरजीए जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एनआरजीए ओके जोरा के एनआरजीए भी सुनथिबो है ना कौन रहे तार मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन पुअर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल सिटीजन्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन ओके कौन रहो देखो राइट आंसर है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ हो एम्प्लॉयमेंट दवा पई बोली यूथ कौन रूरल लोक मन को एम्प्लॉयमेंट दवा पई सेटा हिते है मन रहेगा ओके हला तापर देखो टर्म डिसइन्वेस्टमेंट ओके डिसइन्वेस्टमेंट माने कौन बुझिबा डिसइन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक टर्म डिसइन्वेस्टमेंट माने कौन बुझिबा selling of government shares in public sector enterprises, buying of government shares in public sector enterprises, increasing government investment, reducing government expenditure. कौन रहेगा पिला माने कमेंट बॉक्स रे आंसर लिखो सब कमेंट रे लिखो आंसर जल्दी जल्दी सत्य ना है के पूजा ना आउ के सब रहि गेले सब है वो काज पिला देखा देखा नहीं कारले selling of government shares in public sector enterprises ऑप्शन ए रहिबो राइट आंसर बहुत बड़ा प्रीति है ना ऑप्शन ए रहिबो हला मंदरी ऑप्शन ए रहिबो हला मंदरी खास कर तुमे आज रो पीडीएफ टा जेति की इकोनॉमी वाला क्वेश्चन अछि सेरा टिके बहुत डिटेलली पढिबो उतर हला देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हला द मेन ऑब्जेक्टिव कोन हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मेन ऑब्जेक्टिव कोन होती प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स प्रोवाइड लोन्स टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन सो कोन रहबो पिला माने आरो राइट आंसर सर एग्जाम अपन को मु दोनी यार एग्जाम हला मु खाली कहि देली मु दोनी एग्जाम ना मु एग्जाम दोनी तुम एग्जाम देलो कि ना केबे केबे थिला एग्जाम ना कोन अछि मंदरी एंड प्रीति तुम तो एग्जाम केबे अछि ना सरला है ना तो राइट आंसर कोन रहबा राइट आंसर टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस ओके टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस ओके ओके बहुत बढ़िया टर्म रेपो रेट अच्छा 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 तुम्हें एटा एनटीपीसी टा अप्लाई करो हला एनटीपीसी टा अप्लाई करो हला बहुत गुडा जॉब अछि तारे स्टेशन को वैगन गार्ड पे अप्लाई करो हला अधिक टंका सेरे मिले हला बुझलो मंदिर प्रीति दुई जन जाऊ कोची एनटीपीसी अप्लाई करो वैगन गार्ड पे बेसी लागो हला अधिक टंका मिले the repo rate refers to rates at which banks borrow from RBI rate at which banks lend to consumers
rate at which government borrow from banks, rate at which banks borrow from each others कौन रहेगा? अरे एनटीपीसी रेलवे रेलवे एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी बाहर किए किए जानते ना ना आगे मत कहलो जानते ना नहीं किए किए सब है ना सेटा हला राइट आंसर रेट एट व्हिच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई ओके बस बहुत बढ़िया हला मन रखितो नहीं जीवा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड हाउसिंग फॉर रूरल पीपल रूरल पुअर प्रोवाइड हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर वुमेन्स कौन रहो जानी ना हैं मुंजरी जानी छो किंतु प्रीति जानी ना माने बुझेलानी कौन हिंदी तुम्हें जानी ना कौन तो राइट आंसर कौन रहेगा टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल है कौन टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बोले तो नहीं जीवा टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने कौन बुझु तो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने कौन बुझो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट डिफरेंस बिटवीन टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अरे 21 तारीख गोटे बाहरलानी है 21 तारीख गोटे बाहरलानी ओके 21 तारीख बाहरलानी मु भी अपडेट करनी तो समस्त जान नथियो काले हैला हम मु अपडेट कर दिबे हैला कोन तार स्ट्रक्चर रहउची सेटा भी मु कहि देबी सिलेबस वगैरह हैला राइट आंसर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके ऑप्शन ए रहइबो राइट आंसर हैला हैला मन रखितो The term gross domestic products, okay, refers to total revenue of goods and services produced in a country, total value of goods and services consumed in a country, total value of goods and services export from a country, total value of goods and services import to a country. कौन रहेगा मंजरी एंड प्रीति? The right answer देखिएगा total value of goods and services produced in a country. Option A is the right answer. है ना? माने दो the largest source of foreign exchange earnings for India. Okay, the largest source of foreign exchange earnings in for India. Okay, कोड़ा foreign exchange जदि हम अधिक earning हो इंडिया रे तो कोड़ा द्वारा ला IT services, remittances, tourism, export goods. Okay, कौन रहेगा? IT? No, no, it is not IT. It is not IT. It is remittance. Okay, जदि तुम बाहर देश सपोज तुम अमेरिका रे काम करछो अमेरिका रे काम करछो सपोज तुम एरा रहला इंडिया है ना तुम भारत रो व्यक्ति सेठी काम करछो एडी पठेलो पैसा ओके सेथुर इनकम हुए दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस ओके कौन सेटा को कहै हम रेमिटेंस कहबा हो ना नहीं हला रेमिटेंस हो हला रेमिटेंस हो मंजूरी इन प्रीति रेमिटेंस ओके मन रखिदम तापर देखो the term stagflation okay stagflation refers to high inflation unemployment high inflation and low employment unemployment and inflation and high unemployment low inflation and low employment okay कौन रहे पिला माने राइट आंसर है कमेंट बॉक्स रे रखो ओके हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ए रहिबो राइट आंसर है कौन रहिबो ऑप्शन ए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ओके कौन रहिबो कौन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू farmers to provide loans to farmers to provide insurance to farmers to provide employment to farmers कौन रहिबो अच्छा देखो टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स ओके ऑप्शन ए रहइबो है ना ऑप्शन ए रहइबो हला समस्त मन रखितो हला नेक्स्ट जीवा द टर्म मॉनेटरी पॉलिसी माने कोन बुझे बोले गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्पेंडिंग आरबीआई पॉलिसी ऑन मेक मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई पॉलिसी ऑन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स ओके कौन रहेगा ऑप्शन सी है ना बहुत बढ़िया प्रीतियन मंदिर ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर है ना द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रो मुख्य कौन रहउची तार ऑब्जेक्टिव कौन रहउची है ना
उद्देश्य कौन है? टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिली, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू वुमेन्स, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू चिल्ड्रन, कौन रहବ? ओके, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज। ओके, ऑप्शन ए रहइबो राइट आंसर है, ऑप्शन ए मन रखिथो। फिस्कल पॉलिसी माने कौन बुझा समझे हम इकोनॉमी टर्म रे? फिस्कल पॉलिसी माने कौन बुझा? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, आरबीआई पॉलिसी ऑन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन ट्रेड, कौन रहइबो आर राइट आंसर? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग इज ऑप्शन ए और राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो राइट आंसर मन रखिथो। नहीं दिबा, द मेन ऑब्जेक्टिव द प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। ओके, सहज बिजली हर घर योजना कौन रहइबो? अरे इजी क्वेश्चन एटा कोन कि एटा समझ जानदो नै? इलेक्ट्रिसिटी ओनली ऑप्शन 1 ही अछि राइट आंसर ना नै? मन रखिथो स्कीम गुडा सब मन रखला कोन स्कीम देखो। अच्छा समस्त गुड जिंस को सेंट्रल सर्विस पे जो मन प्रिपेयर होतो से मन तो बहुत इंपोर्टेंट स्कीम गुडा हला ओडिसा लेवल रे छाड़ दियो है ना, किंतु ओडिशा लेवल ग्रुप ए लेवल एग्जाम देखो बहुत इंपोर्टेंट पड़े हला। अच्छा इकोनॉमी रो भी गुड क्वेश्चन पचार दे ग्रुप सी एंड ग्रुप बी लेवल ले भी तो समस्त पे एटा इंपोर्टेंट होची है ना। माने तो ऑप्शन ए रो राइट रे। तो टारगेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल गवर्नमेंट। ओके, लोकल गवर्नमेंट रो सबुट लार्जेस्ट है ना टर्म गुडा बुझदा हला कोन रहू यार मीनिंग कोन रहू? The largest source of revenue of local government is property tax, sales tax, income tax, excess tax. Okay, कौन रहेगा? देखो ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୋର ନ ହେଇକି କ୍ଲାସ ରେ ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ, ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ, ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଗରେ ଯୋଉ ବି କାମ କରିବ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ। ଯୋଉମାନେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖିକି କାଟିଦେବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏମିତି ହଉ କି ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସକ୍ସେସ ହବ। କିଏ ନ ଦଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୁଁ ଦଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା ତ ଦେଖ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ଇଟ ଇଜ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରପର୍ଟି ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଭେଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇନକମ ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥାଏ ହେଲା। ଦ ଟର୍ମ ରିସେସନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ ଇକୋନୋମିକ ଟର୍ମ ରେ ରିସେସନ ହେଲା, ରିସେସନ ଦେଖିଥିବେ କି ଭାରତରେ ଫଲାନା ଟାଇମ ରେ ରିସେସନ ଆସିଥିଲା, ଆମେରିକାରେ ରିସେଣ୍ଟ ରିସେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ରିସେସନ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଣ ରିସେସନ ମାନେ କଣ? increase in economic activity, decrease in economic activity, increase in prices, decrease in prices, कौन रहइबो? प्रीति एंड मंजरी। अरे इंक्रीज रिसेशन रहउछि डिक्रीज हैला, डिक्रीज इन ऑप्शन बी हो, डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रे डिक्रीज देखिया को मिलो, दैट इज हैला राइट आंसर हैला। रिसेशन रहउछि माने जोटा कि भारत गोटे प्रकार आर्थिक लॉकडाउन टाइप रो पळासिबो। लॉकडाउन माने लॉकडाउन ने किंतु जेमति कि भारत रे हितला 1991 मसिया एलपीजी रिफॉर्म आसबारु रिसेशन आस्तिला भारत रे, जा फल कि हमरो जो हम फाइनेंस मिनिस्टर से तत्कालीन सी निजरो बुद्धि लगेगिरी से समय कौन कले एलपीजी रिफॉर्म आनले, जहाँ फल भारत धीरे धीरे आज जो स्टांड कर लोक भाव स्वप्न भी हो जाए मन की। तो तापर किछि एबे कंटिन्यू स्कीम्स गुडा विषय देखियो कौन कौन सब स्कीम्स गुडा सब छला। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ओनली। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना मूल ऑब्जेक्टिव कौन रहला? उज्ज्वला योजना मूल ऑब्जेक्टिव कौन? तो प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू पुअर हाउसहोल्ड, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर हाउसहोल्ड, वाटर सप्लाई कनेक्शन टू पुअर हाउसहोल्ड, टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द पुअर हाउसहोल्ड, कौन रहबो पिला माने? यस ऑप्शन एडा तो इजी क्वेश्चन ता समस्त जानते कौन होची। ऑप्शन ए टू कौन? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समस्त को प्रोवाइड करिया दरकार, राइजिंग सर होची ना मन रखिदो। ऑप्शन ए which scheme provide health insurance coverage up to 5 lakh for poor for family per year? Okay, कौन रहेगा? the scheme provided health insurance coverage up to 5 lakh for family है ना। आयुष्मान भारत, पीएम किसान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवल योजना, कौन रहेगा? कोड रहेगा? बस बहुत बढ़िया, आयुष्मान भारत है ना। ओके
Ayushman Bharat is the right answer, है ना? Okay. Mono kito. Next jiwa. What is the main aim of PM Kisan Samman Nidhi? Okay. कौन aim रहुची PM Kisan Samman Nidhi? Pension for elderly, income support farmers, girl child education, rural electrifications. कौन रहेगा? Manjari and Priti. Option B, income support to farmers. No, no, no. Income support to farmers. Startup India scheme is designed primarily to promote. Okay, Startup India scheme कौन ପାଇଁ से डिजाइन करा जायतिला? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एंड एससी एंटरप्रेन्योरशिप एंड देखिबा अफोर्डेबल हाउसिंग, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मान ପାଇଁ कहा ପାଇଁ स्टार्टअप इंडिया स्कीम डिजाइन फॉर प्राइमरीली कहा ପାଇଁ प्रमोट भी करा जायतिला कहा ପାଇଁ? बस वुमेन्स एंड एससी एससी मानकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करा जायतिला. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करा जायतिला. ओके, है ना? मन रखिथाओ. ओके, देखो मन रखिथाओ कौन है था? which inequity aims to provide 100% household electrification. ओके, एटा तो टिके आगुर कहथिले तथे मते मु कहि दउछि कोन हो कोडा हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन पई हेतला कोन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत योजना तो हबनी, जनधन योजना तो हबनी. ऑप्शन ए भीतर कोन हो? दीनदयाल. राइट आंसर कोन हो? अरे सौभाग्य योजना है कौन रहो? सौभाग्य योजना है. Make in India is related to which sector? Okay, make in India related to कोन sector पे? Agriculture, manufacturing, IT services like and real estate. Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर है ना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है ना. बहुत बढ़िया है ना. तो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम रो मूल लक्ष्य कौन था? लिटरेसी, ई गवर्नेंस और स्पोर्ट्स ग्रोथ, एग्रीकल्चर सपोर्ट. कौन रहबो? मंजरी एंड प्रीति. ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होची तार ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एम्स है मन रखिथाओ. तापर देखो दिबा नेक्स्ट दिबा which scheme target rural employment generation. ओके, को स्कीम टा टारगेट करछि रूरल रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पई है ना. कोन प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्किल इंडिया, पीएम सुकुम कुसुम. अरे आवास योजना अनुसार घर मिलियो हला मन रखिथाओ. आवास अनुसार घर मिलियो हला. मनरेगा अनुसार महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी योजना हला कोन हला. मो भल से ये कर पाने गोटे दीटा वार्ड रही जाइतले सॉरी, किंतु ऑप्शन बी रहइबो हला. रूरल रे एम्प्लॉयमेंट 100 ना स्किल नहीं. स्किल नहीं जो रोड काम होने पंचायत लेवल रे रोड काम हुए है ना. नहीं बंध पोखरी सब काम जो हुए है ना. 180 डेज ग्यारंटी एम्प्लॉयमेंट तो सहीटा होची रे 100 डे हला. 100 डे ग्यारंटी एम्प्लॉयमेंट हला. 100 दिन ग्यारंटी एम्प्लॉयमेंट मनरेगा अनुसार हला. मन तार टिके गाइडलाइन जे कंप्लीट हला. मिशन इंद्रधनुष इज एसोसिएटेड विथ कौन? वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, रूरल रोड एंड फूड सिक्योरिटी. कौन रहइबो? 2005 रे आस्थिला. 2005 हाँ 2005 100 हाँ बस बस है ना. मिशन इंद्रधनुष कौन रहुची? देखो मिशन इंद्रधनुष अनुଯାୟୀ ରହୁଛି vaccination. Okay, it is a health mission launched by the government of India to ensure full immunization of children and pregnant women. Okay, कौन vaccination कहाँ पे होइतला? देखि दो स्कीम टा उतर vaccination sanitation होबनी vaccination हला. मिशन इंद्रधनुष अनुଯାयी vaccination प्रोग्राम रहुଛି जोटा कि कौन रहुଛି छोट पिला मानको इम्यूनिटी एंड वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन्स मानको इम्यूनिटी पे रहुଛି हला. मन लगिदो. Atal Pension Yojana is initiated for the senior citizen, unorganized sector workers, and the women's entrepreneurs and farmers only. कौन रहेगा पिला माने?
देखो अटल पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर गोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर दीटा चला ऑर्गेनाइज सेक्टर जो माने को स्ट्रक्चरल वे रे मनी मिलची है ना नहीं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिमते गेला गां गळे रे बाढे रही गेले है ना काट काम करथुवार लोक रही गेले अथवा कारपेंटर्स माने काल कोन रही सब टेराकोटा टॉयज माने जो बनौचंदी पोर्टर्स माने रही गेले है ना तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जेमति कि मु एबे तुम ऑनलाइन पढौची है ना आम मुडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर गोटे गुड जिनिस होचे ना ना तो सही टाइप रो है the scheme was specifically designed to address the longevity risk and the lack of retirement security for poor and underprivileged workers in the unorganized sectors. Okay, the next one. सुकन्या समृद्धि योजना मेनली कहाँ को बेनिफिट करे है कौन सुकन्या समृद्धि योजना बेनिफिशियरीज आर स्मॉल सिटीजन्स सीनियर सिटीजन्स डिसेबल्ड पर्सन्स गर्ल चिल्ड्रन वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन रहेगा पीसी गर्ल चिल्ड्रन इस गर्ल चिल्ड्रन ओके कौन रहेगा गर्ल चिल्ड्रन मैंने है महिला मानों पे एटा स्कीम है महिला मानों पे स्कीम ओके कौन द गवर्नमेंट बैक saving scheme was specially designed as part of the बेटी बचाओ कैंपेन आर कार फ्लैगशिप प्रोग्राम कहां रो एडा होची बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो काम डाला टू हेल्प पेरेंट्स सेव ये पैसे टू हेल्प पेरेंट्स सेव फॉर देयर डॉटर्स फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस an account must be opened in the name of the girl child who is under 10 years old okay मन रखो National Digital Health Mission NDHM okay National Digital Health Mission is focus का ऊपर कौन digital health records rural sanitation urban planning skill development National Digital Health Mission okay or digital health records okay the National Digital Health Mission NDHM now known as the Ayushman Bharat Digital Mission है ना इज फोकस ऑन क्रिएटिंग डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम फॉर इंडिया ओके किंतु हमर जो कोन सेटा ओडिसा रे थिला कोन एटा स्वास्थ्य कार्ड बिजु स्वास्थ्य कार्ड है ना नहीं ताटो भलो कोडा न थिला स्किल इंडिया मिशन एम्स टू स्किल इंडिया मिशन एम्स टू हायर फॉरेन वर्कर्स प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन train youth in market relevant skills and list of old monuments okay कौन रहबो स्किल इंडिया मिशन aims to okay train youth in market relevant skills okay the skill India missions aim to equip the youth with a necessary skill for employment and entrepreneurship thereby closing the gap between what the industry needs and what the workforce has okay देखो मन mission Bhagirath is a flagship scheme of which state okay mission Bhagirath is a flagship scheme of which of the state ओडिशा तमिलनाडु तेलंगाना केरला कौन रहो नहीं एटा हम तेलंगाना हला तेलंगाना ऑप्शन सी हो राइट आंसर तेलंगाना द प्रोजेक्ट प्रोवाइड पाइप सेफ treated drinking water to every household in the state the scheme source water from the Krishna and Godavari rivers to supply both urban and rural areas okay मन लगी तो तेलंगाना रो प्रोजेक्ट हला मन लगी तो तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का ऊपर फोकस करे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना फोकस का रूरल हेल्थ स्किल डेवलपमेंट रूरल यूथ रूरल बैंकिंग ओल्ड एज होम्स ओके बहुत बढ़िया राइट DDUGKY ओके इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कहार इनिशिएटिव टाइम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल मन रख तो एटा मन रख होला कार इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होला फोकस प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट लिंक्स इन स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ओके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है ना SPMRM ओके ब्रिज द गैप बिटवीन कहा भीतर से जो गैप अच्छे को मैंने फॉलोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मुखर्जी रूरल मिशन अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज माइनिंग कौन रहेगा
The option here is urban rural infrastructure. Syama Prasad Mukherjee mission was created to bridge the rural urban divided by the developing the cluster of villages that have urban like amenities while preserving the essence of a rural life, community life. Okay. Objective गुड़ा तार देखिए कौन objective रोज कौन economic and technological service connectivity infrastructure development reduction of distress migration okay एती होची तार objective है कौन रोज ये सब तार objective रोज है मन रखिदा जदि काग अछि ता पढि दो pdf तो provide कर दो समस्या रे पढि दो ना मन दो which scheme targets improvement in mother and natural child nutrition okay स्कीम कोड़ा टारगेट करे इंप्रूवमेंट करे मदर एंड चिल्ड्रन मगर न्यूट्रिशन को मिड डे मील स्कीम तो हबनी पीएम पीएमएमवीवाई है पीएमएवाई स्टैंड अप इंडिया मातृ वंदन योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इज राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव कौन रोची व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स फॉर द फास्ट लिविंग चाइल्ड टू इंप्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. The midday meal scheme is focused on school age children's. PMAY is a housing scheme and Stand Up India is a promoting entrepreneurship. Well, is a different in this IDB so for the day. Chela mano ito. Next video. The Annapurna scheme का ऊपर benefit रखे ना beneficiaries मैंने सब किए small entrepreneurs and the senior citizens not covered with the NSAP and the larger industries and disabled children. अन्नपूर्णा स्कीम कहाँ को कवर करे NSAP है कौन senior citizen not covered in NSAP that Annapurna scheme primarily benefits senior citizens not covered by the National Social Assistance Program NSAP full form. The scheme provides 10 kgs of free grains rice or wheat for months of immigrant senior citizens aged to 65 or older than eligible for the National Old Age Pension Scheme. हाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एम्स का ऊपर करे ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऊपर वुमेन्स एजुकेशन माइक्रो फाइनेंस स्मॉल बिजनेसेस अर्बन हाउसिंग गवर्नमेंट जॉब्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहाँ ऊपर एम करे ओके देखो राइट आंसर कौन होबो इट इज अ माइक्रो फाइनेंस में स्मॉल बिजनेसेस इज प्रोवाइड कोलेटरल फ्री माने कौन से प्रकार जिनस रखी कि तुम पैसा रखबनी से जिनस खाली पैसा ही नहीं जो लोन्स अप टू 10 लाख to non-cooperative, non-farm, small micro enterprises in India. The scheme, which was launched in April 15, seeks to facilitate and encourage entrepreneurship. Okay, one of next one. PM Swanidhi scheme provided support कहाँ ऊपर street vendors and industrialists, farmers, rural teachers. Street vendors. Okay. PM स्ट्रीट वेंडर पे होला कौन रे बेटा इट लॉन्च तो केबे इतला एटा लेखाई लेखिनी हला ओ तो लॉन्च द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर टू हेल्प देम रिस्टार्ट देयर बिजनेस ओके शायद 2021 रे ना कौन लॉन्च हेतला ना कोन हला 16 क्लास ओके थैंक यू प्रीति एंड ऑल ऑफ यू जो क्लास अटेंड करलो थैंक यू फॉर वेरी मच एंड आगु को इन द क्लास करी चलो our application को डाउनलोड करो एंड आज के क्लास टा केमिति लागिला प्रीति एंड मंदरी एंड जो माने अथो समस्त कमेंट लोग सर भल लागला ना नहीं है ना नहीं केमिति लागिला क्लास टा ओके थैंक यू